हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने सुना होगा या शायद आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत होती होगी, मेरी बाइक एवरेज नहीं दे रही। कोई बोलता है चलाने के ढंग पे डिपेंड करता है। इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट इन योर बाइक, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन योर चेन, इंजन इज़ ऑल राइट, proper air pressure in tires, then also if you are facing problem regarding the mileage of your bike, then I am here to tell you where you are mistaking. So let's start one by one. You might have listened that a 150cc bike is giving more mileage than 125cc bike, or 200cc bike is giving more mileage than 150cc bike. So it doesn't depend that there is any mistake in engine or any chain or like pressure in tire. The problem is with your riding style. Like you should not accelerate your bike suddenly or brake your bike suddenly. It's not only for bikes, it is applied on other vehicles also, like cars, buses, trucks, everything. Sudden acceleration means आप अचानक से उसको रेव कर रहे हो एंड जो फ्यूल पंप है वो पेट्रोल एब्जॉर्ब कर लेगा, इंजन में भेज देगा अकॉर्डिंग टू दैट रेविंग कैपेसिटी, और फिर यू सडनली प्रेस ब्रेक्स। दैट मीन्स जो पेट्रोल गया इंजन में वो तो वेस्ट होगा ही, जाहिर सी बात है। एंड दिस इज हाउ द पेट्रोल इज वेस्टेड, द माइलेज इज लेस। So no instant braking and no instant acceleration unless it's an emergency for you. Now the next point is regarding gear shifting of your bike. Like if you are shifting gears at 8,000 9,000 rpm normally, तो एवरेज नहीं आएगा। And if you are shifting normally gears at 4,000 5,000 rpm or 5,500 rpms, definitely it will give a change in mileage of your bike. Gradually the mileage of your bike will keep on increasing. Now we cannot say that it will give 100% efficiency, because no engine is made that can give 100% efficiency, but it will give, it can change the mileage. And the reason behind less mileage in traffic are continuously changing gears, braking, acceleration. All these factors affect a lot in mileage of your bike. In few days I am going to make a video regarding the average of my bike. मेरी बाइक कितना एवरेज देती है। I have calculated it one or two times, not only one or two times, several times I have calculated it. So highest was 47 km per liter and the lowest was 33 km per liter. And both situations were different. जब 47 का माइलेज दिया था उस टाइम पे देयर वाज नो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, ओपन हाईवे एंड कांस्टेंट स्पीड वाज मेंटेन्ड थ्रू आउट द ट्रिप। एंड जब 33 का माइलेज दिया तब
आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट था, और ऐसे ही चल रही थी ख़राब रोड्स पे, कंटिन्यूसली चेंजिंग गियर्स, एक्सीलरेटिंग, ब्रेकिंग. द वे ऑफ योर राइडिंग makes the difference in mileage. So I hope that this information will help you out in increasing mileage of your bike. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.